Professor Park Jae-woo, South Korean scientist. It is since in the 1987. Right now in the worldwide practice. It is a practice around the 14 countries. This time we are organizing SIC 2019, which is in the Mumbai. We are inviting about 11 countries people in the foreign doctors, and then we are about 1,000 participation of the Sujok practitioners. We are discuss of the new method of the Sujok as well as some philosophy about the trilogy. And this time February the 2nd and 3rd we are doing in the Sujok conference, and then contents and then speaker is like that. It's one doctor from the Israel, and then Russia, and then in the Korea, and then Indian. And then those things we are in the discuss of modern medicine, some of the stress related about the physical problem as well as immunity problem and the kind of thing. As well as we are introduce of the new method of the Sujok as well. So we hope our organization could deliver enough knowledge and the message to the people. Actually, our organization working in India since 1990s. As well as every year we having a 900 free treatment camp and then free teaching purpose. In this time after SIC finish it, we are working on the 2 mega treatment camp in the 70 foreign doctors as well as 100 Indian practitioners. One place in the Nagpur, we are around 150-170 practitioners are giving a free treatment camp. Second one is in the Delhi. Is Nagpur we are taking 8, 7th, 8, 9, 10th. In the Delhi we're going to taking 13th, 14th of the February. So you come and then experience of the power of the Sujok. What about Mumbai? Mumbai is we are taking about about SIC in the during and the 2nd, 3rd of the February. You can come and then taking enough knowledge and there's some amazing results of the during in your hand. See, there is a lot of the disease, a lot of the problem, but among them, how many the disease we can solve in our hand? Sujok is the method, the very simple method. Just taking the few seconds, a few minutes, you can find the solution. There is a lot of disease and illness, but a lot of disease and illness coming with the symptom. This symptom can be dissolved and then the solution, find the solution in your hand by the simple point which you can find out. Sujok has this much of the knowledge. You can come and learn and then enjoy your life without the less struggling of the pain and then in the problem. Thank you very much. मेरा नाम अशोक कोठारी है और मैं इंटरनेशनल सुजोक एसोसिएशन इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सुजोक थेरेपी की जो हम SIC 2019 जो मुंबई में आयोजित कर रहे हैं, ये प्रैक्टिशनर एज वेल एज कॉमन पर्सन दोनों के लिए यूज़फुल है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर पार्टिसिपेट करेंगे वो कुछ ना कुछ इससे बेनिफिट लेके जाने वाले हैं। सुजोक थेरेपी एक वैकल्पिक चिकित्सा का ऐसा ड्रगलेस मेथड है जिससे व्यक्ति खुद का स्वयं का ट्रीटमेंट खुद कर सकता है। डे टू डे लाइफ की बीमारी हो, इमरजेंसी कंडीशन हो, और सबसे इम्पोर्टेंट पहलू जो मैं इस क्लास के अंदर, इस सेमिनार के अंदर भी जो प्रोग्राम होने वाला है, उसमें एक बहुत ही यूजफुल टॉपिक है सुजोक इन इमरजेंसी। मतलब डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम के अलावा कभी हमारे जीवन में ऐसी घटना घट सकती है जब तुरंत हमारे पास में किसी भी तरह की चिकित्सा उपलब्ध नहीं होती है, और उस वक्त पेशेंट का जीवन बचाने के लिए हमारे को कुछ करना जरूरी होता है। तो उस वक्त ऐसी कंडीशंस में किसी भी व्यक्ति को, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, किसी को हेमरेज हो जाए, किसी को किसी तरह की इंजरी हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में सुजोक द्वारा उस व्यक्ति की जान को कैसे बचाया जा सकता है, तुरंत उसको जब तक मेडिकल उपचार नहीं मिले उसका ट्रीटमेंट करने के बारे में भी इस सेमिनार के अंदर एक विस्तृत एक लेक्चर रखा गया है। सुजोक का मतलब है हाथ या पैर। सुजोक का मतलब है ट्रीटमेंट या तो हम हाथ में करते हैं या पैर में करते हैं। शरीर के किसी भी रोग का उपचार, कोई भी रोग का उपचार, ज़्यादातर लोग सुजोक को एक्यूप्रेशर से कंबाइन कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन सुजोक थेरेपी एक अपने आप में कंप्लीट चिकित्सा पद्धति है जिससे किसी भी तरह का रोगों का उपचार, जो रोग
दवा से ठीक हो सकते हैं, वो सुजोग के अंदर वो रोग बिना दवा से, बिना किसी साइड इफेक्ट के ठीक हो सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेमिनार के अंदर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वो प्रोफेशनल हो, चाहे नेचुरल थेरेपिस्ट हो, चाहे किसी और स्ट्रीम के मेडिकल प्रैक्टिशनर हो या कॉमन मैन हो, सबके लिए ये SIC 2019 जो है वो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। इंडिया इस बार भारत के अंदर अपना तीसरा इंटरनेशनल सुजोग कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसके अंदर तकरीबन 13-14 देश में से 1000 से ज़्यादा लोग उपस्थित रहने की अपेक्षा है। अभी तक अलग अलग देशों में से 80 से ज़्यादा डॉक्टर्स ने ऑलरेडी अपना कंफर्मेशन दे चुके हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं अलग अलग कंट्री में से, और भारत के अंदर से भी 400 से अधिक रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो गए हैं। और 2 और 3 फरवरी को होने वाले इस कॉन्फ्रेंस के अंदर विविध विषयों के ऊपर बात रखी जाएगी। एंजाइटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सुजोग इन इमरजेंसी एंड डे टू डे लाइफ, मॉडर्न मेडिसिन के साथ में सुजोग का कॉम्बिनेशन, ये सारे विषयों के ऊपर अलग अलग देशों में से आ रहे एक्सपर्ट के द्वारा बात करी जाएगी और सुजोग के माध्यम से स्वास्थ्य जगत को किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है, हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया का मिशन कैसे अचीव किया जा सकता है, इसी मोटो के साथ ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है। इसके अलावा नागपुर और दिल्ली के अंदर ये फॉरेन के अलग अलग कंट्री से आ रहे एक्सपर्ट और इंडिया में से जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा 2 ट्रीटमेंट कैंप्स का आयोजन किया गया है, जिसमें नागपुर के अंदर 8, 9, 10 फरवरी को और दिल्ली के अंदर 13-14 फरवरी को ये कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, जहां पर उनकी लोकल जनता को उसका फ़ायदा मिलेगा और सुजोग के माध्यम से ट्रीटमेंट डायग्नोस्टिक के माध्यम से वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है डे टू डे लाइफ की जिसको अपने आप मैनेज कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको डिपेंडेंट रहने की आवश्यकता नहीं रहती है, तो इस चीज़ को वो कैसे कर सकते हैं। जैसे हेडेक है, स्टमक पेन है, बैकएक है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये सारी बहुत सारी समस्या हमें डे टू डे लाइफ में होती है। In the morning we are having digestion problem, sometimes we are having a headache, sometimes we are having a stress, workload बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आदमी थक जाता है। तो these are the things can be managed very easily without taking any kind of medicine, without taking any kind of prescription. You can do certain things on your hands and foots and you can relieve from that. So this is what we are going to introduce in this conference and these camps. कैंप में फ्री कैंप होगा या फ्री? Camps basically इसके अंदर we are not charging any fees. Maybe the registration fees of 50 rupees can be taken. That is just to meet the expenses. But otherwise 3 दिन का जो consultation होता है, that consultation and treatment will be provided free of charge. Why you choose Nagpur and Delhi? Why not? लास्ट ईयर 2017 के अंदर जब कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उस समय पर हमने इस प्रकार के कैंप का आयोजन मुंबई में किया था। तो वी आर द ऑर्गेनाइजेशन विच इज वर्किंग इनटू द एंटायर इंडिया and globally also we are working into the 40 countries. So every year, every 2 years we are organizing this conference. So at that time we are choosing the different cities. This time we have chosen Nagpur and Delhi because Nagpur is the global headquarter of our organization, International Sujok Association. That is why we have chosen Nagpur as a one point, and Sujok is into the very high consideration by government to be recognized as one of the treatment method in India. So we have chosen Delhi also so that we can show the impact of Sujok therapy to the important decision makers. Thank you so much.